of India. Clad in blue jersey, they challenge darkness with determination, courage and untiring spirit. In our studio, we are in conversation with other men in blue who recently has repeated the victory as they championed the T20 World Cup of visually impaired. Welcome to the studio. The entire team of visually impaired Indian team is with us, and I feel like I am sitting in the dressing room and having this conversation with you. And today we would like to know the stories of courage, the stories of how you people actually struggled and proved to be the #1 team in the blind cricket tournaments. And we have with us Patrick Rajkumar, who is the coach of blind cricket, Indian cricket team. We have Ajay Reddy, who is the captain, and vice captain Prakash Jairamaiya, and also assistant coach Sajju. So I feel like, as I've said earlier, that it's like a dressing room conversation where we'll discuss everything, starting from the victory that you had. And I would like to first go to the coach, Patrick Rajkumar. How was the success? Like, in 2012, the entire team won against Pakistan, and now you have again won against Pakistan. What is the difference between the victory of these two T20 World Cup? The 2012 World Cup was the first ever T20 World Cup that was organized, and that's the time Cabby had revived this blind cricket in India. In 2010 they started, and started with the 2012 World Cup. So India, there was no much expectations on the Indian team to win the T20 World Cup, because the tag of champion was with the Pakistans, because they had won the ODI World Cup, third ODI World Cup. So not much pressure was there. But then we have to win this to establish ourselves as the blind cricketers. So, and then we won the World Cup, and we got a lot of accolades, and we were appreciated very much for what we did. But then soon it was forgotten, because not much of a blind cricket publicity was there. Not many people knew it. But now from there, travel from 2012 to 2017, the journey has been an amazing one, because in 2012, the people knew that we were the defending champions, and there was already a lot of publicity, and then the blind cricket had grown enormously into a very professional kind of a team. So there was a competition to get into the Indian team. So the players were all, wanting to be part of this team, because a lot of things had happened. Okay. And then the tag of a defending champion was a big pressure on the players. And then secondly, the home ground. It was happening in India, and it was happening in multi-cities. So we have players from 10 cities, and most of these 10 cities we went and played. Okay. So every player was under pressure to prove to his home ground, okay, and to India. So this was a fabulous feeling, and it was really, from the day one, we were on a hot burner, sitting like, anytime it would, burst, like, because we have to win this World Cup. Yeah. See, that is the way that you have expressed that that victory was so important for you, because it was important in order to revive the cricket, this visually impaired team, India cricket team. But if I would ask the captain, Ajay Reddy, like Shekhar Nayak was the captain in 2012, and he has a lot of accolades attached to him, and to fill into his shoes, how difficult was that? Actually, from Shekhar I learned so many things. Actually, I selected first time in 2010, myself and Prakash, we both together debut. After that, my cabby promoted me as a vice captain, the time Shekhar captain. I learned so many things, how to deal with the pressure condition, how to come back, how to play, what is the game plans. I learned so many things under Shekhar captainship. After that, 2014 also we went South Africa. Okay. We played there. He is my role model player. I learned so many things from here, captainship. That's why, cabby
checked means Asia Cup also I was the captain. That time I proved. Now they gave full-fledged captainship for me. Finally, every cricket player they are having one dream to win the World Cup. Myself, I won thrice. 2012 T20, 2014 ODI, 2017 T20. This is my dream. When I used to play cricket, that time I was thinking only one. I have to represent country in World Cup. That time India has to be one. Now under my leadership, with help of my team coordination, team work, finally I achieved. We won the World Cup for nation also. Ladies and gentlemen, the winners of 2017 T20 World Cup for the Blind, Team India! This World Cup we are dedicating our past President Nagesh sir. He actually did so many things for blind cricket. Unfortunately, is not with us now. And if I'm not wrong, that you are a man of series with 50 counts, if I have to say. How is that, Actually, that is all count for zonals and nationals, international, each and every count, not international. Actually, our international match not regularly happen that much. I played so many zonals. I am playing since 2006. I played so many zonals, national selections. Regarding whole series, I get 50 plus something. Okay. So we have shared the experience of coach, we have shared the experience of captain, and we cannot miss out on the star of visually impaired Indian team. And if I'm not wrong, he is Prakash Jai Ramaiya. And you're looking very good with that glass and everything. You're looking very, a classy person. That I am the star. You think that you are a star, and you are a star. So how you are able to struggle through all these obstacles which are there, and become a star of the entire visually impaired Indian team. बट हम क्या बोलना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम ये नहीं था, बट पाकिस्तान का टीम लीग में बहुत हमारा टीम स्ट्रगल कर रहे हैं. वो टाइम में बहुत नहीं, वो लीग मैच में नहीं देना इसको सोच रहा है, वो थोड़ा मुश्किल हो रहा है. बाद में हमारा टीम और कोच पूरा मीटिंग किया. मीटिंग के बाद ऐसा नहीं होना, सेम ये फोर्थ टाइम है, मतलब फर्स्ट एवर T20 ओडीआई वर्ल्ड कप और एशिया कप एंड ये सेकंड T20 वर्ल्ड कप. इसलिए हमको पहला फील्डिंग मिला, वो थोड़ा अच्छा लगा हमारा टीम को. हमारा 197 को थोड़ा इसको 20 ओवर्स में खत्म किया. बाद में मैं और अजय ओपनिंग गए 10 ओवर में 110 मारा था, बट इसको रन आउट हो गया. बाद में मैं और केतन आराम से मार लिया. So the Indians have done well in less than 10 hours. They have scored 100, 9.4 overs, 101 for no loss. On track. Easy meet. 4 runs. No need to run for that. And Prakash Jai Ramaiya helped himself with a half century. Very well compiled half century, Prakash. The local lad exchanges pleasantries with the skipper, taking the aerial route, celebrating it in style. Stadium pretty quiet now, so requests need not be made for them to remain quiet, as the Indians have lost the important wicket of the skipper. Nicely done by Ketan Bhai Patel. He will get 8 runs for this. 4 into 2. The stadium back to life. पार्टनरशिप की जो आपने बात की है, मैं ये जो दोस्ती है, ये जो आपकी ऑन फील्ड दिखती है, क्या ऐसी दोस्ती आपकी ऑफ फील्ड भी है? ऐसा सब कुछ है, क्योंकि एक्चुअली मी एंड प्रकाश हम लोग वी नोस अवर बैटिंग स्ट्रेंथ. इफ Prakash go to hit, I will stay. If I go to hit, Prakash will give strike rotation. We have that kind of coordination. That's why we actually this time we tried new combinations. That's why we didn't bat so many matches. Myself only I played 3 matches only opening. Okay. But actually this is multi-cities. They have to their own state players we give opportunity because they talent recognition purpose. Finally they achieved
finally we also proved we are the champions. So very well. This is Akram trying to bowl and trying to follow the batsman on the leg side, but then he is pulling it out. And lovely shot here. And that is where the Indian victory is sealed and the championship is retained. The world champions Indians are. They have retained the title. Celebration time, and why not? That is how that match had ended. And the celebrations continue. And there it is. Superb effort by the Indians. They demonstrated themselves very well in terms of bowling, batting and fielding in all three departments. And the victory march is always a pleasure to watch. I would say, if I'm not wrong, you are the champions of Asia Cup. You're the champion of World Cup as well. Although Pakistan has won 2 World Cups, you have won 1. But that too, you are a team which has won all the World Cups. All the formats, if I'm not wrong. And ये एक टीम के साथ, जो कहते हैं ना, एक टीम का साथ उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है. और मैं ये जानना चाहूँगी अजय से कि आपको कौन सा अपना टीम प्लेयर ऐसा लगता है जो आपको लगता है कि हाँ ये फील्डिंग सबसे अच्छी करता है, या ये बॉलिंग बहुत अच्छी करता है, या विकेट कीपर बहुत अच्छा है. आई गेस प्रकाश, आप विकेट कीपर में उनका नाम लेना चाहेंगे, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी आपका फेवरेट वन कौन है, ताकि यहाँ पे लोगों को पता चले. वन तो हर चीज में एक एक लड़का रहता है, एक एक खिलाड़ी रहता है. कीपिंग में तो प्रकाश अल्टीमेट है. फील्डिंग में तो वी हैव एक्टिव फील्डर इन द वर्ल्ड एंड शॉर्ट फील्डर आल्सो. वेंकी स्टाइलिश फील्डर, स्टाइलिश बैट्समैन, super fielder, and Sunil also, and Ganesh Mondkar also, Sukram also, active short fielders. वो लोग चेस करके बॉल पकड़ के तुरंत थ्रो कर सकते हैं. बहुत एक्टिव है वो लोग. रनिंग देखा तो क्या एथलेटिक में भागता है ना, 100 मीटर्स रन, ऐसा दिखता है. फील्डिंग में ऐसा है. बॉलिंग में रामबीर है, माई सेल्फ ऑल्सो. B1 में बहुत एक्टिव रहता है. सोनू फील्डिंग बाउंड्रीज बहुत रुका है. सोनू, जाफर, केतन, ये तो मैं एक नाम का तो नहीं निकाल सकता है. ऑलराउंडर. सही बात. मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हर इस पूरी टीम में ऑलराउंडर है. विकेट कीपर भी है कोई तो वो बैट्समैन भी अच्छा है, तो वो फील्डर भी अच्छा है. सोनू, आपके बारे में अजय ने बात करी और आपको सराहा आपकी अपनी इस मतलब एज ए खिलाड़ी आपको कैसा लग रहा है कि हाँ मुझे मेरे कैप्टन जो है मुझे अप्रिशिएट करता है, हर एक टीम के मेंबर को अप्रिशिएट करता है, बट अगर आपका नाम ले रहा है और 2-3 लोग का जिन्होंने आपने नाम लिया, तो कितना अच्छा फील होता है कि ऑन द फील्ड तो करता है, लेकिन आज पब्लिकली बोल रहे हैं तो मुझे ज्यादा खुशी हो रही है. नहीं, और ये तो मजाक की बात है. अल्टीमेटली हम लोग कंट्री के लिए खेल रहे हैं और हमारा टीम बहुत स्ट्रांग है. तो हम लोग जब ग्राउंड में जाते हैं या फिर हमें जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है, हम लोग ये हमारे कोचेस हमें बोलते हैं, सब लोग बात करते हैं 100% की, हमारे कोचेस बोलते हैं हमें 150% देना है, और वही हम प्रूव करते हैं. जहां भी हमें चांस मिले, चाहे बॉलिंग में मिले, फील्डिंग मिले, कहीं भी मिलेगा, वी हैव टू प्रूव. सो वो हमारा इंटेंशन है और वही हमें सिखाया गया है. सो you have talked about coach. I would like to go back to Patrick and I would like to know, like, how difficult is it to coach such a team which has a talent, but you actually, did you go through any kind of training, special training to train them, and how challenging was that? Like any other normal cricket, it's like the survival of the fittest. So even the Indian blind cricket team is selected on the basis of the strengths that they have. So if you look at the 17 players, they're all amazing talents, and they have they've gone through a lot of rigor and a lot of determinations. So we plan our training schedule, keeping it, because blind cricket is an improvised cricket. मतलब है ना, सारा का सारा rules 90% same रहता है, लेकिन there are certain improvisations, like you have B1 players who have to bowl 40% of the overs. How can you explain on that category, like B1, so B2, we have B3? B1 players, B2 and B3. B1, those who cannot see anything, completely blind, okay, and they compose of 4 players in the playing 11. Compulsory. Yeah, compulsory, four have to be there. Then you have B2 players who can whose visibility is about 3 to 6 meters, and there 3 players are there. And then we have B3 players whose visibility is about 6 to 9 meters, and there are 4 players. So this is the composition of the playing 11. So in this there is also so in this 40% of the overs have to be bowled by the B1 players. So it's a very crucial pace of any cricket. So that they can win the match for the country, they can lose a match for the country. Similarly, when it comes to batting also, we have a batting circle which is composed of B1, B2 and B3. So if any opening is composed of B1 or B2, then the next has to be B3.
If B2 and B3, for example, this World Cup, Prakash is a B3 player and Ajay is a B2 player. So they both open the batting. So next has to be a B1 player. Okay, so this circle play. So it's a very, technically, very limited in the options. So we'll have to be very, very shrewd in choosing your options, in sending your batsmen. It's not like anybody can just walk in and play to our situations. It has to be to a particular rules and regulations. And the runs, of course, the disadvantage with the B1 bowling is that they won't get the line and length because they can't see anything. But the advantage is while batting, if they bat 1 runs, it becomes 2 runs. Okay, so that's the advantage. So we'll have to use them in such a way that their disadvantages becomes an advantage when they're batting and things like that. Okay, so that means if B1 category player bats and he scores 1 run, so his run will double. Double, and the team score also will double. Suppose he scores 4, then it will become 8. Okay, so Ketan did score. So it's very good. It's actually a game changer. You can say a B1 player is a game changer. Exactly. It will always change. Yeah. So Saju, you are the assistant coach of the team, and what is there any specialization that you have to do while coaching them? Like, do you coach them only bowling, or Patrick takes the responsibility of the bat, or you both share the equal responsibility and run the entire team and coach the entire team? Actually, we used to plan. As Patrick said, told that we used to plan according to what we need to do it for the next match. There's some strategies we used to plan. The same thing happens in league matches. You can see the entire league matches. Comparing with other teams, you can see that Pakistan, Badr Munir was a man of the series in B3. But for our players, like it was last World Cup, Prakash was that. So you can see that the entire 17 members, for us it is very much confused that whom should we put in the 11s. Okay. Because all the 17s are equally good. That means selection is quite crucial and selection. It's all depends upon the situation of the match which you are going to play. Because when we are comparing about Pakistan, it's in normal cricket also they are very good against fast bowlers. The same way that they were asking about Deepak Malik, he's the fastest in India, in the world too. But we have to kept him outside because they are very good against fast bowlers. So this is what the strategy we have planned, and it's like all the strategies what we planned with the coaches and the players. The previous night we planned, and the field was completely set for the batsman. There like 2-3 main players were there. We set the field according to that. Even though the power play they had, because initially the first 2 overs I was scoring the match for 6 overs. Even all the matches I scores. So that first 2 overs it was 27 they scored. So like it was going out of, like it's like we cannot show the pressure to the players, and it came down, the run rate falling down. It was 10 overs 116. Yeah. Right. And it came, and there was a small prediction outside when me and Sonu were sitting outside. I just predicted a score like this score is going to get down by 193. Okay. But it was 19.5 overs, it was 193, the score was. In the last ball of the over, they scored a boundary, and it moved on to 197. So that means that is very important when you are actually doing when you are on the match, you have to decide accordingly. So that is a very important thing, very crucial thing, to who should be the one that should be on field and how it should go, right? It is already there. We coaches, we are just standing outside. We are one among them who are playing in the 11th inside, and those who are sitting outside also. We together 19 are playing, but only 11 can play inside. Exactly. And it's like it worked out. It was I full credit goes to the players, because the plan which we formulated, they implemented in the field. Okay. It was exceptional fielding performance. That what Ajay told, like Ganesh Munkar, Venkatesh, Sunil, even the B1s, and I just want to very much clearly point out some of the B1 players who have done superb in that final. Yeah, we would definitely like to know the names of B1 player who has actually, played a key role in changing the game. Not in World Cup T20 that it won recently, but throughout the series. Like, how was it, and who were they? Because all the B1 players have been done exceptionally well in all the matches. Okay. But when we point out the final match, and they have taken Jafar Iqbal, and now Ketan Patel is not here, and Ketan Patel, they have taken 4 wickets, 4 Pakistani, Ketan Patel has, and 2 wickets Jafar. And they were the main batsmen, Pakistani batsmen, and some of them are not B1, they are B2, B3 players. They can taken wickets. That was a turning point, because this we can conclude that without B1, blind cricket
cannot you cannot win blind cricket unless and until B1 players actually plays well and performs well. Because it's so hard for the captain and the vice captain. Because you know that because I'm also a cricketer and I know when we bowl, I'm also a fast bowler. When we bowl, it's so hard for us that when you take a new ball, it swings a lot. Right. So it's so hard for us to control the ball first. And even if we can see that each and every skill we learn is through 70% is visual perception, and the rest with hearing and all the things like the command, all the things from the coaches. And even if they can't see, with that 30%, you can imagine that the other sense, that is hearing sense, they are using, and they are bowling accurately. So hats off these people, they have doing that. And in the finals, it's such a pressure match. They can't see, they can only hear the crowd is like waving outside and I was hats off these people, they have done a great job. And I guess this time the entire stadium had 25,000 spectators, if I'm not wrong. Yes. And that is a huge number, I would say. And that means you guys all have a very good fan following then. So Prakash, I would like to come to you and I would like to ask you one thing कि यहाँ पे सबने कोचेस ने बात करी ट्रेनिंग की, सिलेक्शंस की बात करी, उन्होंने बोला कि B1 प्लेयर्स को खेलना कितना जरूरी है, क्रूशियल होता है बहुत ज्यादा. आप मुझे ये बताइए कि एक्चुअल में ये जो गेम होता है विजुअली इम्पेयर्ड का, ये खेला कैसे जाता है? मतलब इज देयर एनी, जैसे एक मैंने पढ़ा है कि बॉल होता है एंड बॉल के अंदर एक बेयरिंग्स होते हैं. व्हेन इट हर्ड, मतलब दैट्स इट्स ऑल अ गेम ऑफ साउंड एंड बाय सेंसिंग द साउंड आप उसको उस पूरे गेम को खेलते हैं. तो मैं जानना चाहूँ, आई एम श्योर हमारे दर्शकों को भी ये जानने में बहुत रुचि होगी कि आखिर ये गेम खेला कैसे जाता है. और मैंने आपको इसलिए चुना बिकॉज यू आर द स्टार. मेन 100% में 80% कीपिंग का रोल होता है कि ना B1 बॉलर क्या सोचता है, पहले डायरेक्शन पूछता है कीपर को. कीपर मैं बाद में थोड़ा आवाज देता, उसका बाद में वो बैट्समैन को रेडी करके बाद में बाल डालता है. बाद में और एक चांस क्या था ना, उधर बैट्समैन किधर मारता है वो डायरेक्शन देता है. मैं देखो अब जाफर इधर, केतन इधर था, आप साइड मारे तो नजदीक रहता है बैट्समैन, मेरे को दिखता है ना थोड़ा, इसलिए राइट साइड लेफ्ट साइड ऐसा बोलते हैं, वो भी जल्दी कनेक्ट करके बाल भी जल्दी देता है कीपर को. अच्छा, कीपर. You can also ask Jafar when to explain how he feels being a B1. हाँ, आप बताइए जाफर. देखिए हमारे क्रिकेट में हम लोग अब जैसे साइटेड क्रिकेट में आप लोग हर वक्त बोलते हैं कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन का बात बोलते हैं. हम लोग का क्रिकेट में ये हैंड और ईयर का कोऑर्डिनेशन होता है. आपको कान से ज्यादा शार्प होना चाहिए और आपको कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होना चाहिए ड्यूरिंग द मैच. और इस बार का जो टूर्नामेंट था वर्ल्ड कप में, हम लोग ने देखा कि इंदौर में 18,000, भुवनेश्वर में 15,000 दर्शक और फाइनल में मोर देन 25,000 पीपल वर वाचिंग लाइव इन द स्टेडियम. तो वो जो सिचुएशन था, हमको साउंड सुनना है, साउंड सुन के खेलना है, फिर उसमें सारा लोगों का शोर मचाते हैं. हमारा जो गाना था आओ शोर मचाओ, सभी शोर मचाया, हम लोग भी उनको बहुत अच्छा रिसीव किया, हम लोग जीत के दिखाया. लेकिन वो बहुत बड़ा चैलेंजिंग था कि साउंड सुन के कैसे खेलना है ग्राउंड के अंदर. ये हमको कोचेस हर वक्त बोलते थे, देखो अब साउंड बहुत आने वाला है, आप लोग एक्सपीरियंस प्लेयर हो, आप लोगों को पता होना चाहिए कैसे हैंडल करना है. आप खुद ही सोच लो, खुद सोचो, दिल में सोचो कि क्या करना है. लेकिन हमारे क्रिकेट में जो लोग B1 होते हैं तो टोटली हम लोग डिपेंड करते हैं साउंड पे. तो उसमें कीपर, जैसे बोल रहा था प्रकाश, की कीपर का रोल बहुत ज्यादा होता है. हम लोग 40% ऑफ द टोटल ओवर शुड बी बोल्ड बाय B1 बॉलर, सर ने बोला है. तो B1 को क्या डिफिकल्टी होता है, वो बॉलिंग एंड पे जब होता है तो बैट्समैन या स्टंप उसको दिखता नहीं है. वो कीपर का साउंड को फॉलो करके बॉलिंग करता है. और उसमें उसको एक्यूरेट बॉलिंग करना है. तो पहले ये एक सोच था कि B1 लोग ने बहुत वाइड डाले, लेकिन हम लोग को इतना अच्छा प्रैक्टिस दिया गया कि हम लोग एक्स्ट्रास कम हो सकता है, कम हुआ है इस बार. और हमारे जीत का यही मेन रीजन है कि हमारा B1 का बॉलिंग इस बार बहुत परफेक्ट था. हम लोग B1 ने 4 विकेट निकाला, जैसे केतन और मैं. पहले दिन हमारा जो टीम मीटिंग था तो मैंने पैट्रिक सर को, अजय को बोला था कि सर अगर कोई बॉलर काम नहीं करता है तो मेरे को पूछिए, अगर मैं कॉन्फिडेंट हो तो मैं बॉलिंग करता हूँ. उस दिन ग्राउंड पे फर्स्ट केतन तो बॉलिंग करता है, तो गोलू बॉलिंग कर रहा था, गोलू का थोड़ा लाइन थोड़ा बिगड़ गया. तो फिर अजय पूछा कि जाफर आप बॉलिंग कर सकते हो? मैं बोला ठीक है, दे दो, कर देंगे. फिर बॉलिंग किया तो पहले ओवर पे 1 विकेट मिल गया, फिर दूसरे ओवर पे भी 1 विकेट मिला, तीसरे ओवर पे मेरे ओवर पे 1 रनआउट भी हो गया. तो 3 सक्सेसफुल ओवर्स था. तो मेरे लिए वो अमेजिंग एक्सपीरियंस था कि वर्ल्ड कप के फाइनल में विकेट मिलना. और
कैप्टन और कोच का जो एक्सपेक्टेशन है उस पर खड़े उतरना बहुत बड़ी बात है। फर्स्ट इनिंग के बाद पैट्रिक सर ने मुझे हक किया और उनके आंख से आंसू आ गया, तो वो जो फीलिंग्स है उसे हमें बता नहीं सकते। और इसमें हमको ट्रेनिंग के टाइम में जैसे सज्जू सर का स्पेसिफिक काम होता है कि हमको साउंड ट्रैकिंग के बारे में बहुत कंसंट्रेट करते हैं वो, हम अच्छा, उनको साउंड ट्रैकिंग कराते हैं। तो हमको ये फील्डिंग साउंड प्रैक्टिस ट्रैकिंग कराते हैं। कैसे कराते हैं मतलब? साउंड ट्रैकिंग सपोज हम लोग लाइन पे होते हैं, पूरा B1 फील्डर्स हम लोग लाइन पे होते हैं, तो सज्जू सर आगे होते हैं, वो बॉल को किस तरफ मारेंगे हमको पता नहीं है। वो बैट से मारते हैं, हमको दौड़ के जाके फॉलो करके फिर सज्जू सर जिधर है उधर ही थ्रो करना है। तो उसमें क्या होता है, थ्रो का परफेक्शन होता है और बॉल को फॉलो करने का ट्रेनिंग होता है, दोनों एक साथ होता है। तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो सज्जू सर, जैसे इन्होंने बोला कि साउंड का इसमें पूरा खेल होता है और प्लस विकेट कीपर की आवाज काम करती है यहाँ पर। तो जैसे अगर इन्होंने बोला से ट्रेनिंग में आप लोग क्या करते हैं कि बॉल आप लेते हैं और उसको जहां पे भी फेंकते हैं तो वो साउंड को देख के, उसको साउंड को सुन के ट्रैक करते हैं कि हमें कहाँ पे बैट मारना है। तो आप उसके बारे में और जरा हमें विस्तार से बताइए कि अगर हम जैसे एक, क्योंकि एक एकदम अनोखे प्लेटफॉर्म में, एक अनोखे फॉर्मेट में खेला जाता है और यहाँ पे जागरूकता कई लोगों को नहीं है कि एक विजुअली इम्पेयर्ड का क्रिकेट कैसे खेला जाता है। सो उसको अगर आप एक बहुत ही सिंप्लीफाई वे में अगर आप बताएं तो कैसे एक होता है ना एक कंटिन्यूएशन में कि हाँ कैसे खेला जाता है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, वैसे अगर आप बता सकते। Exactly, if you want to get an answer, I will let you know in a single sentence. Like, I'm a teacher in a blind school, so I know each and every wavelength of a visually challenged person who can move, because I'm a mobility instructor in the school. So I used to teach some movement education. So, and I'm a cricketer too. So like, I know this cricket is made of, it's a sound oriented game. So like just concentrating, पहले जो एशिया कप में आया था जो जाफर का bowling का stance different था. So I will stand behind them, I just analyze them, not even just in the first ball, okay, you are doing this and that. We'll stand behind them, we'll just watch them, what is wrong, the technique in that. It's all the thing about, there are some technical errors, some small technical errors are happening that differs the line and length, it goes. Because line is mandatory for all the batsmen. Length is optional in normal cricket. What a catch it has been! And see that high five is going on and Ijaz is gone. अभी हमारा नया रूल है कि like Lexum attack is also there. So this Ketan Patel, he used to do, because he's that much experience. That is what he is playing the 4th World Cup now. Because he's that much experience. Like for Prakash, it is not for a big deal that to Ketan to tell that you have to bowl in this line, because what Prakash says once, Ketan will bowl the entire 4 overs in that line. Okay. He knows only that, and it is the only thing that some technical errors happen. So I just have started in correcting the technical errors. That makes easy for them to bowl accurately towards which side they have to bowl, and we always give an idea to the bowlers that this batsman is good in this area, so you have to concentrate on this line. So उस line पकड़ने के लिए we will tell Prakash to give the command from behind the clapping or here the way then, and the other one Jafar told about the fielding practice. They are following the sound. So like when the more it rolls, the more they can concentrate the ball where it is तो going. जैसे जैसे बॉल जो है रोल करती है वो उसको उसकी आवाज को ट्रैक करती है. They are tracking और the ऐसे sound. फील्डिंग करते हैं. Fielding के लिए. And the two skills have been learned that is we are rolling the ball, they are chasing the ball and they are picking the ball, and while clapping from the wicket end, so they will be throwing. So that fielding as well as throwing, those two skills have been, it's a combined skills have been learned in that. Okay. So sound होता है और clap करना होता है. तो ये चीजें होती हैं अगर आपको एक विजुअली इम्पेयर्ड क्रिकेट टीम को लीड करना है और उनको कोच करना है. सो दिस इज हाउ यू डू, एंड स्पेशली आपकी स्पेशलाइजेशन बिकॉज यू teach in a visually impaired school, so you have that specialization and that's how you actually train the team players of the team. And अजय, हमने बहुत सीरियस बातें कर ली यहाँ पर कि कैसे खेला जाता है, ये स्कोर्स है, ऐसे ऐसे खेलते हैं. अजय, आई वुड लाइक टू आस्क वन थिंग कि पाकिस्तान के अगेंस्ट, बिकॉज एक इमोशनल क्वेश्चन जो है ना वो अटैच हो जाता है जब भी, चाहे आप नॉर्मल वर्ल्ड कप में खेलें या चाहे आप इस वर्ल्ड कप में खेलें, एक पाकिस्तान के अगेंस्ट, हाँ अपना दुश्मन है, वो कैसा एक्सपीरियंस रहता है जब भी आप पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलते हैं? Actually, against Pakistan, game is different. Or body language also
change. Our involvement also aggression आ change. जाता है। Aggressive आ जाता है. Our involvement also change. Body में दूसरा तरफ fire आता है. Okay. वो तो बाहर दिखा नहीं सकता है, सिर्फ फील्डिंग से दिखाते हैं हम लोग. फाइनली फाइनल आल्सो 10 ओवर्स वो लोग मार रहा था, स्कोर 220 230 जाता बोल के सोचा. बाद में ड्रिंक्स ब्रेक में बात किया था, कोई बात नहीं, विकेट गिर रहा है, रिस्ट्रिक्शन करेंगे, विकेट आएंगे 200 बिलो, 197 if I'm not 200 बिलो पक्का हम लोग करेंगे बोल के विद इन 5 मिनट्स में हम लोग मीटिंग किया, सेम फील्डिंग सेट किया था, फाइनली अचीव किया. मतलब बॉडी लैंग्वेज तो अलग रहता है. दूसरा टीम के साथ तो इतना फाइट तो आप लोग देख नहीं सकते हैं. वही वो चीज जो है अंदर से एकदम उभर के आती है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट करना है तो हमें मतलब दिखाना है, और उस समय भारत का झंडा जब लहराता है तो फिर उससे वो भी भी सब मजा तो अलग है. ये तो है. वो लोगों के सामने हमारा फ्लैग देखना तो मजा अलग है. हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, लगातार स्कोर्स की बात कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि इस बारी तो 197 स्कोर था, और 2012 में जब आप लोगों ने वर्ल्ड कप जीता, then India chose to bat and scored 227 run. How 259. 259. Okay. Okay, 259 runs. So, would you like to throw some light on that win? Like how that win is different from what you have won in 2017? बहुत डिफरेंट है, क्योंकि वो टाइम पे तो ऑलरेडी पैट्रिक सर बोला है, पाकिस्तान का टैग है चैंपियन लेवल पे. वी आर रनर्स ऑलवेज. वो कम बैक करना है, किसी हालत से जीतना है, वो हमारा फायर में. मैं पैट्रिक सर शुरू में बोल दिया था, सारे हिट एंड गेट मैं मार के आता है, सिर्फ 9 बॉल में 28 मार दिया. अनफॉर्चुनेटली आउट हो गया, एक्चुअल 6 मारने के लिए गया था, आउट हो गया. बाद में प्रकाश जो खेलता है हिटिंग, मैं वो करके बाहर आया था. मैं कैसे खेलता, प्रकाश ऐसे खेल रहा था. मतलब वो बोला था शुरू में, मैं हम दोनों को बॉलिंग लागने जाता रहता. उसके बाद जो की रोल था केतन का 98 बनाया, B1 प्लेयर 98 बनाया, वो चला गया उसको 258 2012 में. वो 258 तो पक्का तो टफ स्कोर है. इनफैक्ट बहुत ही अच्छा स्कोर हम लोगों ने बनाया था. 200 224 तो मतलब नॉर्मल हो सकता है. 230 240 फाइटिंग स्कोर, 250 तो वन साइड होगा. फिर भी पाकिस्तान वाला शुरुआत बहुत अच्छा किया. फाइनली वेंकी सुपर कैच था, फाइन लेग से भाग के आके ऐसा स्क्वायर लेग मिड विकेट स्क्वायर लेग मिडिल में कैच पकड़ा था. सुपर कैच, हाई कैच था. वो मैच चेंज कर लिया. 14th over now, and what a stop and a catch. In fact, it is a low catch, very well taken, absolutely superb effort, and the batsman bit waiting for the umpire's reconfirmation. But what a catch it has been. This is what we are talking about. Just waiting and the ball just flicking and the point region picking it up so very well. Superb effort there. Nisar Ali gone for 9 runs. This is the kind of fielding we would see even at the highest form of cricket played at international levels as well. एक मेन प्लेयर था, मेन प्लेयर जेमिल बोल के, उसको इस बैट उठाने के लिए मौका भी नहीं दिया है. ओके. बाउल्ड, उसको मालूम नहीं पड़ रहा कैसे आउट हो गया बोल के. इतना बॉडी लैंग्वेज तो पूरा चेंज हो गया. मतलब इन्वॉल्वमेंट पक्का है, बार जीतना है बोल के पूरा. प्लेयर्स एक्चुअली वो टाइम पे प्लेयर्स का भी इंजरी हुआ था, इंजरी भी ग्राउंड में हुआ, फिर वो लोग बाहर नहीं गया. नहीं, जीना है मरना है, इधर ही है, जीतना है बस. तो ये हमारा टैग था. 2012 में अच्छी फील्डिंग, अच्छी बॉलिंग एंड मैं कहूँ अनडाइंग स्पिरिट, एक तरह से कि इंजरी होने के बाद भी फील्ड से वापस ना जाना, ये आपकी सफलता का राज रहा. ये बार तो हम लोगों को कॉन्फिडेंट है. बार बार हम लोग 2012 में पाकिस्तान बीट के, 2014 में, 2016 में कंटिन्यूस फाइनल में. फाइनल का फेवर हम लोगों को नहीं है, फाइनल का फेवर वो लोगों के. उसके साथ प्रैक्टिस है, उसके साथ न्यू प्लेयर्स है, उसके साथ न्यू टैलेंट, सब कुछ जोड़ के मतलब वन साइड मैच. और इस बारी जो सक्सेस हम लोग को मिली है, बादर मुन्नीर जो पाकिस्तान के प्लेयर है, वो काफी क्रूशियल माने जाते हैं, और हमेशा से ये रहता है कि उनको बस आउट कर दे तो आधी पारी तो हमारी हो गई. तो बादर मुन्नीर को किसने कैच मतलब किसने विकेट उनका लिया था, और उसके बारे में जरा बताइए कि जब आपने वो विकेट लिया तो उसके बाद जो पूरा टर्न ऑफ मतलब गेम जस्ट टर्न्ड ओवर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग.
So how was that? How that happened? केतन का केतन लिया बॉल में I guess bowler अच्छा बता पाएंगे. तो आप तो बदर मुनीर जब बहुत अच्छा बैटिंग कर रहा था, हम लोग का जो ड्रिंक्स ब्रेक हुआ था उसके बाद हमको उसका विकेट बहुत क्रूशियल था कि उन्होंने बड़ा बेरहमी से मार रहा था. हमको 10 ओवर में वो लोग जब 116 रन बनाए थे तब हमको लगा कि नहीं 11 के एवरेज पे है, लेकिन शुरू से जो एवरेज में थे उससे थोड़ा कम हुआ था, कंट्रोल हो गया था. फिर हम लोग को उनका वीकनेस पता चल गया कि हमको फील्डिंग टाइट करे तो उनको बाउंड्री नहीं मिला तो कैच जरूर देगा. तो ऐसे ही हम लोग किया, बॉल थोड़ा स्लो किया और फील्डिंग पूरा टाइट किया तो वो हिट करने का कोशिश किया, तभी केतन के बॉल पे पकड़ा गया. केतन उसको ऑफ स्टंप पे बॉल डाला था तो वहां वो हिट करने का कोशिश किया, फिर रन आउट हो गया. जो मुंडकर ने कैच किया उसको, तो मुंडकर का कैच जो है ये बहुत क्रूशियल कैच है. वो ऐसे ओडीआई वर्ल्ड कप में भी एक पकड़ा था जो क्रूशियल था ओडीआई वर्ल्ड कप जीतने के लिए, ये भी क्रूशियल था. तो ऐसे मुंडकर को हम लोग जब इसको निपटा लिए उसका मुनीर का विकेट, तब हमको कॉन्फिडेंट आ गया. तो और ये डाउन हो जाएगा और उन लोग मेंटली भी उन लोग को प्रेशर आ जाता है अगर उनका मेन विकेट जाता है. पाकिस्तान के साथ यही होता है, 2-3 विकेट ले गए तो हमको और कुछ नहीं करना पड़ता है, वो लोग अपने पकड़ा देते हैं विकेट हमको. I should say it's pretty competitive cricket at the moment till the middle. In the 14th over now. And what a stop! And a catch, in fact it is a low catch. Very well taken. Absolutely superb effort and the batsman bit waiting for the umpire's reconfirmation. But what a catch it has been. जैसे हम लोग बात करते हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान हमेशा से काफ़ी अच्छा मतलब अच्छी टीम रही है इस फॉर्मेट में एंड और भी फॉर्मेट्स में. 2 वर्ल्ड कप उन्होंने जीते हैं. तो ऐसे में बादर मुन्नीर का जब आप लोगों ने आउट किया, मतलब आपके बॉलर्स ने जब आउट किया, सो आपके लिए वो मोमेंट कैसा था और आगे फिर उसकी स्ट्रैटेजी जो है वो किस तरह से आपने फिर चेंज करी या फिर आपने किस तरह से अपने टीममेट्स को, अपने टीम मेंबर्स को बताया कि आफ्टर बादर मुन्नीर व्हाट? So usually, as Ajay also was sharing, Pakistan is one of the best teams, and we love playing them. One, because they are Pakistanis and we are Indians. Second, because they're the best competitors. All the players, they get the best out of players, so they're very competitive. You can be nail-biting finishes. His World Cup, maybe we have come with new plans for them. Okay, so we have either we allow them to bat or we allow them to bowl and things like that. This World Cup, we knew that our fielding has to be extremely impeccable. I mean, we cannot make any mistakes in fieldings. And that's one of the reasons why Saju also was discussing about fast bowling and all that. So we had to rest even Deepak Malik, who is one of the strike bowlers, one of the fastest bowlers that we have. So we thought of, bowling is not important. We have to have a very young legs and a very good fielding. Because we knew we can win this match only through fielding. Okay. So we were an entire plan was on fielding, and we had studied all the batsmen of Pakistan. We knew what is their strength, how they play, whether they are offside batsmen or leg side batsmen. So everything went on well till 10th over. Luckily somehow we were restricting them, trying to restrict them to leg bowling. Okay. Then we realized that it is not restrictions, that they will now open up. We knew that once the scores are tied up, they will open up. So we had, after 10th over, we had a small discussion and said, let's give positive bowling, let them hit the ball. Let us bowl offside. Okay, let's not, restrict them in scoring. So then our bowlers started bowling on offsides. Then they started opening up the batsmen. And we know we have very good fielders. We have Venkatesh, we have Mundkar, we have Sunil, we have Sukram, all very good fielders we had. Okay. So we kept them all on the boundaries, and as per the plan, exactly like as if we told, like one by one, they were getting frustrated because score was not coming. There was no boundaries, so they started lofty shots. Okay. So हमको तो catch practice ना किया हम लोगों ने. Then we took every catch. We knew that, we said even half catch मिलेगा. Venkatesh एक superb catch. The umpires have to really come together and decide whether it's a catch or not catch. There was a so low catch. Okay, and then the runouts. So all this, excellent fielding is one that gave this World Cup a real edge for us to win the World Cup. When a B1 player is playing, it's pretty good in the context of the game. Another single taken, there's a possibility of a run out. Yes, a direct throw, another run out. But you would agree with me, the bowler should have been there behind the stumps, and there was no need for a direct throw. Unnecessary run taken. Pakistan pay the price. Another wicket gone. So you actually tested Badr Munni's patience, and that's how you cracked him, and that's how you actually, bowled down the main player of Pakistan. But apart from what we are discussing about play, we are discussing about the win, we are discussing about the coaching.
But apart from that, let's discuss the things which are off the grounds. For example, the stories. I'm sure being a player of a visually impaired Indian team, there are a lot of challenges that one has to face. And so Patrick or Saju, I would come to you, and I would like to ask, like, are there any player in the team which has a very different kind of a story on his own, and would you like to share that story, or that team player would like to share that story? You cannot just say like one. We have many players are there. Like Okay. for example, if you can take the case of Anish Beg, he's from Mumbai, and it's like he started off. You can just hear it from Anish Beg itself. Like what was his story? Like what all challenges he have been overcome to reach this last ultimate step. You can ask Anish itself. He can say the story regarding that. जो मैंने अभी तक न्यूज़पेपर्स में और आप लोगों से जाना था कि अनीश बेग एक डब्बे वाला था और कहा जो बल्लेबाज है। डब्बे वाला नहीं, ये ट्रेन में वर्क करता था। ओके, ट्रेन में आप काम करते हैं? यस यस। सो आप अपनी कहानी, आप अपनी जुबानी बताइए और हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह से आप एक ट्रेन में बेचते थे सामान और कैसे आप आज इंडियन क्रिकेट टीम में हैं। आई थिंक मैं 2006 2007 में क्रिकेट खेलता था, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर कुछ टूर्नामेंट खेला और उसके बाद फिर मैं 2007-8 में ट्रेन में बिजनेस ज्वाइन किया फिर कुछ फ्रेंड्स के साथ। तो मैंने क्रिकेट यानी दूरी कर लिया, छोड़ दिया क्रिकेट। यानी घर की कुछ कंडीशन खराब थी तो इसलिए मैं क्रिकेट छोड़ दिया। घर वालों ने मना किया कि आप क्रिकेट खेलते हो, कुछ तो मिलता नहीं है, फालतू टाइम पास कर, यानी टाइम पास करने से अच्छा कुछ कमाओगे, कुछ रखोगे, कुछ घर में दोगे तो काम में आएगा। तो फिर मैंने आफ्टर 6 इयर्स मैंने क्रिकेट छोड़ दिया, आफ्टर 2007 to 2013 मैं क्रिकेट से दूर रहा। फिर 2030 में फिर कुछ दोस्त लोग मिले, अनिस कर, यानी क्रिकेट बढ़ गया था ब्लाइंड क्रिकेट। उस टाइम ब्लाइंड क्रिकेट कोई जानता नहीं था। 2012 के बाद, वर्ल्ड कप के बाद बहुत लोग जानने लग गए ब्लाइंड क्रिकेट क्या होता है। तो फिर मैं 2013 में कुछ शुरू किया, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल शुरू किया, फिर नेशनल्स खेला 2014 में जब वर्ल्ड कप हुआ, जब इंडिया जीत के आई टू अफ्रीका से 50 ओवर वर्ल्ड कप, तो मैं बहुत खुश हुआ। तो फिर मेरा एक ख्वाब था, इसके बाद मैं भी खेलना चाहता हूँ इंडियन टीम में। तो हार्ड वर्क करते रहा, खेलते रहा। जो भी कुछ प्रॉब्लम है मेरी पैसों की, घर की, यानी घर पे देने खर्चे के लिए, आई एम ए मैरिड, तो प्रॉब्लम जो कुछ फेस किया है मैंने, बहुत प्रॉब्लम पैसों की वजह से। तो कुछ मेरे फ्रेंड्स है तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि तुम जो भी कुछ प्रॉब्लम है आपकी पैसों की तो हम दूर यानी देते, बाद में आप दे देना। तो यानी फ्रेंड्स लोगों से मैं इतना बहुत यानी उनको मानता हूँ कि उन्होंने, यस, बहुत मुश्किल, यानी घर पे इतनी प्रॉब्लम है, इनकम नहीं किसी की तरफ से, डैडी जो है कुछ कर नहीं पाते, भाई है, यानी फैमिली थोड़ा बड़ा है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे पे, कुछ ना कुछ मंथली घर पे देना है। तो फिर कुछ फ्रेंड्स लोग हैं, तो फिर मैं बोलता हूँ फ्रेंड्स लोगों को, कुछ भी प्रॉब्लम है फ्रेंड्स लोग मेरी सॉल्व कर देते प्रॉब्लम पैसों की। फिर इस बार 2017 में वर्ल्ड कप, तो मैं सोचा भी नहीं इस बार मैं सक्सेस हो जाऊंगा, इंडियन टीम में जाऊंगा। तो कैंप में गया, कैंप में बुलावा आया मेरे को, कैंप में गया, फिर कैंप में अच्छा किया। तो पैट्रिक सर संजू सर कैंप में थे, तो उन्होंने मुझे पहचाना, फिर उन्होंने मुझे यानी अच्छा चांस दिया उधर भी खेलने का। फिर ऐसा लगा कि इस बार मैं वर्ल्ड कप खेल सकता हूँ, बहुत कॉन्फिडेंस था मेरे को कि मैं फिक्स हो गया हूँ। फिर वर्ल्ड कप में यानी कैंप में भी बहुत अच्छा, यानी हमारा जो वर्ल्ड कप के पहले कैंप था उसमें भी अच्छा फिटनेस यानी वार्म अप वगैरह प्रैक्टिस बढ़िया किया। फिर वर्ल्ड कप खेलने के बाद ड्रीम कम हो गया, यानी सोचा नहीं था वो हो गया। यानी 3 months गो, यानी सोचता भी नहीं था कभी मैं ख्वाब में भी कि मैं इंडिया के लिए, यस सपना पूरा हो गया, एक लगा कि हाँ मैंने कुछ हासिल किया। यस सपना पूरा हो गया। और मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ कि कुछ ध्यान दीजिए मेरे पे। बिल्कुल, ये यानी अभी तक कुछ डिक्लेयर किया नहीं उन्होंने मेरे लिए। यानी एक ही प्लेयर है महाराष्ट्र से, अदर गवर्नमेंट, कर्नाटक गवर्नमेंट, आंध्रा गवर्नमेंट, सब गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ उनके प्लेयर को दिया है। मेरे को अभी तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं, कोई अलॉटमेंट नहीं किया। पैट्रिक, आई वुड लाइक टू कम टू यू ऑन दैट इशू। इट्स अ वेरी सीरियस इशू, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, बट ऐसे कई प्लेयर्स हैं यहाँ पे जिनके साथ ये प्रॉब्लम है। वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है, एंड स्टिल दे आर ब्लीडिंग इन ब्लू एंड दे आर डूइंग सो मच फॉर द टीम, बट व्हाट दे आर गेटिंग इन रिटर्न इज जस्ट फ्यूटाइल, इट्स जस्ट नथिंग। सो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? Amazing. Demands क्या है? Yeah, I mean, Anis is one example of such player. I mean, when he came to the
camp, we saw such a lot of fire. He was not expecting, any job, or he was not expecting any kind of a cash prize. The fire in him to represent India, that was amazing. And, I used to always discuss with captain, vice captain, of course, Ajay and all that. Look at him, this man, he is a prospect for India because he was giving his all out, okay. Not knowing what he will get and not that, okay. That needs to be recognized. I think when he was willing to sacrifice his, life, like he was putting his best, and okay, he knew if he gets injured or something happens to him, one earning member will be not there. Despite all these difficulties, he has shown the valor. I think it's a high time that every state government should recognize such kind of a players and give them a job and tell them, you have done country proud. You have taken such a big risk for the for India, for flag. So I think we will appreciate that, and we will give you a job. We will give you cash prize. You have Anis, you have Sunil, you have Venkatesh, you have name anybody. You have Rambir, you have Ganesh, Ketan. Everybody is like that. So, okay, they don't come with a big dream of going back with a bag full of money. They come with a lot of passion, a lot of enthusiasm to play for the country, and that is very much. I mean, Anis is one of the examples. Okay, from a train selling things to sacrificing a dream, sacrificing a earning of a day's earning is a big thing for blind players. Obviously, because it's not it may be 10 rupees, it may be 20 rupees, but life goes on for them. Okay, they're not government employees, they're not Virat Kohli, they're not the Dhonis who get sponsored thousands of crores and hundreds of crores at least, and they can sit back and relax. They can't even afford to come for a practice. They can't even afford to pay the taxi. Okay, such is the poor stories of these players. And I think at least now, when they win the World Cup, it is up to the country and up to the state and the central governments to stand up and say, yes, we are with you. All this while you have been neglected, you have been put down in the society, you have no place. Now we respect that. We respect your abilities. And, we appreciate that. You have just mentioned that. I would like to highlight that point that CABI is the Cricket Association for Blind in India. Few sentences I would like to know that what are the demands which you expect from the government and as well as from the BCCI or the associations that aid cricket in India. I think you brought in a very wonderful point because CABI, the Cricket Association for India, is kind of a is a godfather for the blind cricketers. Under the aegis of the Samathanam, and the president Mahantesh is there, who's been, he is the godfather for the entire blind cricket, because blind cricketers were not, they were all scattered. As I told, 2010, once this was dismantled, the players were playing, but there was no recognition and all that. So CABI took over and brought in a kind of a recognition, a structured organization. About 25,000 blind players are playing. So they have nowhere to go and play except for CABI, who organized this and brought under them state organizations, and now they play at district level and state level and national levels. So what these players along with CABI are asking is, first is a recognition. The Ministry of Sports should recognize CABI as an organization which runs the sports. Secondly, recognition from the BCCI, okay, to consider blind cricket also as a cricket. Like women cricket, you have under 14, you have Ranji, Trauma, so many divisions and levels of cricket you have. Why not the blind cricket also be considered under the fold of the BCCI? What happens once this recognition comes? See, these players are all, either they are studying, they are working, or they are all laborers, daily laborers. They come leaving 50-60 days of their work and come and play. After playing, what happens? They don't get their holidays. If they are working in a government jobs, they don't get their holidays recognized. If they are working in the labor, casual laborers, they don't get the payment for the holidays. Okay, so they don't get any match fees at all. They just come for the pleasure of it, play and go back and make the country proud. But they go back again to their own troubles and where there are no jobs, and they lose their employment and all that. But if there is a recognition, if there is a recognition of BCCI or the government, they would be given some kind of a stipend, they would be given a match fees. I think that is the level now we are asking for, because enough of giving 5 days of front page advertisement, enough of giving tweeting and saying that you have done a great job, enough of few of the appreciation letters that we get. It's high time that they get the due recognition in terms of awards, in terms of jobs, in terms of some kind of a standard income, wherein they can tell proudly or boldly to their parents and say, no, I'm going to play cricket, don't worry, you will be taken care of your food. That much guarantee at least should be given to these players. So on that note, I would like to say that they dream for very little and petty things, and fulfill your dream, your aspirations to get the victory, to get the success in World Cup T20, in World Cup ODI World Cup, and in Asia Cup.
when they can give you so much pride, they can give you so much without even asking anything, then we can at least give them job security. We would like the government to acknowledge that. On that note, we are wrapping up from the studio. Bleeding in Blue, this was Team India in a very different taste. Thank you.